delegate the right tasks. ये बहुत जरूरी है. जो delegate करना है वही करो. Choose the right person. Empower through effective communication. Empowerment is your responsibility. You own it. I trust you. You are brilliant. Right? You will do this better than I will. This is empowerment. Because you have to make people believe that they are really good. Otherwise, they won't be able to do it. Discuss milestones, review dates. You are fully empowered. 2 हफ्ते के बाद बैठेंगे प्रोग्रेस देखने के लिए कैसा चल रहा है. So check points हैं. ऐसा नहीं है कि check points नहीं है. Create an environment of trust and freedom. Exactly what we're speaking. Not at all different from children versus employees. Exactly same situation. You see, a lot of times the way we have been treated as kids in a very different environment. We try to use the same systems on our kids. They are not going to work. चलेंगे नहीं वो system. Give them goal and give them the time frame also, right? लिखो है ना. And monitor and review. Sometimes just give them a goal. Let them decide how much time it will take. Give them a challenge. Kids love challenges. Because that's when they really start to experience their creativity. The more they experience their creativity, the more confident they become about their abilities. स्टडी भी है, गेम इसलिए खेलते हैं उनको हर बार चैलेंज मिलता रहता है और वो चैलेंज मिलता है इसलिए गेम खेलते हैं वो, इसलिए नहीं खेलते वो एंटरटेनमेंट है. हमें लगता है वो टाइम वेस्ट कर रहा है वो. We are not challenging our kids hard enough. We are only asking them to complete their homework. That's not challenging for them. दिल से इसमें क्या है? Challenge is when you ask them to find something which is very difficult to find. Give them the time they want. Share stories of people who do great things. Stories of brilliance. कई बार दूसरों की stories of brilliance सुन के अपनी brilliance याद आ जाती है. Why do people feel inspired from stories of people like Steve Jobs, Elon Musk? यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. आती है ना ये feeling? It's possible, right? अभी वो फाल्गुनी नायर ने नायका क्रिएट की है. Now see how many women are going to feel inspired. उससे पहले तो सबकी brilliance दबी हुई थी, अब suddenly जाग जाएगी. They will realize if she can, then I can. सारे पोस्ट सोशल मीडिया में उसी Sorry? सोशल मीडिया में सारे पोस्ट खुद ही आता है. Right? So she's become a role model of brilliance. Indra Nui, we shared a case study. Yes. She's a role model of brilliance in a different environment. I had अभी उनका एक वो था 1 घंटे का पूरा वर्कशॉप. Of इंदिरा नूई, नॉट वर्कशॉप लाइक कॉन्वर्सेशन. हमारे ईयू में था. great, brilliant. शी वाज टेलिंग हर स्टोरी पूरी She was invited there to express. ऑन जूम. Sure. यूएस. Yeah. So what's the last review the entire process? देखो ना कि जो आपने एक सिस्टम क्रिएट किया है डेलीगेशन का, हाँ. वो पूरा सिस्टम ठीक है क्या, या उसको रिव्यू करके थोड़ा और बेटर करना है. This process रिव्यू में राइट पर्सन चूज किया नहीं Again, this किया, हाँ, repeat. राइट Power पर्सन चूज किया कि मैंने नहीं, राइट टास्क दिया था टू द रॉन्ग पावर पर्सन. किया उसको नहीं किया. मेरे लिए कैसा रहा, ठीक रहा, गलत हाँ. रहा. हाँ, Self क्या study. बिग पिक्चर थिंकिंग, स्टेप ये बैक. सेल्फ असेसमेंट है. Okay. Okay. गोइंग बैक. बहुत अच्छी है ये 6 स्टेप्स आ गए ना क्लास लगे. नॉर्मली हम ऐसे डेलीगेट करते हैं, ठीक है यार तू कर ले इसका, बस वही जब छोड़ो. तक कुछ सोच ही नहीं करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा. डेलीगेट करके एम्पावर करना, हाँ, उसको वो कभी मोटिवेट करना, मैं कभी नहीं. इंस्पायर करना. माइंड डिसाइड. जैसे अगर आपको डील, आप कहते हो डील कोई नहीं कर सकता, कोई ना कोई होगा टीम में जिसमें क्षमता है, लेकिन उसको एम्पावर करने की जरूरत थी. जा बेटा. मैं नहीं आ रहा हूँ आज डील तू क्लोज करके आएगा. बेटा है कोई नहीं. अब आप देखो उसकी फीलिंग क्या होगी लाइफ में, राइट? सर एक शेयरिंग है. आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. आपने सर एक शेयरिंग करी थी कि व्हाट्सएप इज जस्ट अ टूल फॉर डेटा एक्सचेंज, Yes, information not data. communication, and I want to share with everyone. I have executed that and it is next level. मतलब हम लोग जो सिर्फ कुछ भी करना वॉइस नोट, सर आई हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग एंड इट इज नेक्स्ट लेवल. मतलब हम लोग को बोल रहे हैं उसको लैंड कैसे कर रहा है और वो परसीव करके क्या कर रहा है. द इंटेंशन इज टू गेट दैट वर्क डन
or to get the result we want gets done on call, not on WhatsApp. Not on Clear WhatsApp. communication. So बिल्कुल। thank you sir, ये मतलब आपने जो tool दे दिया and I'm going to use this for the rest of my life and this has made things faster. हम सोचते हैं यार बात करेंगे ना तो टाइम लगेगा, छोड़ वॉइस नोट भेज देता हूँ। एक्चुअल में उल्टा उल्टा है, है। वो वॉइस नोट खींचते हैं वापस में। Yeah. उधर बात करके वो क्लोज हो गया और वो डन भी हो गया काम। Right. तो और कई बार तो उसको लैंड ही नहीं होता कि हमने कहना क्या था, तो वो बहुत अच्छा असर आपने You're right. Most things get misunderstood. इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा सर, जो आपने बोला था कि ये जो भी प्लेटफॉर्म है दिस इज नॉलेज शेयरिंग नॉट कन्वर्सेशन। Not con- हाँ. सो Exactly. इवन आई हैव रियलाइज दैट एंड आई मेक श्योर कि कुछ भी ऐसा मैसेज होता है इज इट अ नॉलेज ट्रांसफर और इज इट अ कन्वर्सेशन। Good point. Good discrimination. एंड वो Yeah. फिर मैंने पकड़ लिया कि जब भी मैं वॉइस मैसेज या कुछ ऐसा लिख रहा होता हूँ जो कि कन्वर्सेशन है, सो आई स्टॉप दैट इमीडिएटली कॉल। Immediately call. ये इसको Yes. कहते हैं ये brilliance, right? So he is able to discriminate now. ये कॉल है, ये नॉलेज ट्रांसफर है या ये कन्वर्सेशन है? कन्वर्सेशन है तो कॉल, Yes. मैसेज या वॉइस मैसेज Knowledge transfer In customers I started. Information. इन्फॉर्मेशन मतलब आई मीन कि Anything which is a document. राइट। तो कई बार Bhante हम bhai does this. He prefers कि अगर कोई चीज है ना, आप immediately call करके उसको on call पे clear कर हाँ मैंने काफी इम्प्रूव कर दिया मैंने। हाँ। You know, what I used to do was. Okay, let's move on. So ये उसी के steps हैं. Delegate the right tasks. Again, discrimination between critical care, non-critical care, tasks that must be delegated, amount of responsibility, authority needed, choosing the right person, identifying people who can do the task efficiently, matching knowledge, skills and experience. क्या इसके पास क्षमता भी है करने की? ऐसा थोड़ी कि बस डेलीगेट कर दिया आंखें बंद कर। Don't just utilize the available employee. ये भी हम एक गलती करते हैं कि जो फ्री है बंदा उसको काम दे देते सर हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि हमें पता है कि ये बंदा कर रहा है बट मतलब दिस इज एक्सपीरियंसिंग। कुछ बंदे होते हैं ना जो जिनको काम तो हो जाता है काम, कहीं ज्यादा काम उन्हीं को देना और पड़ता फिर है। पाइल अप हो जाता है। मतलब देन भी मतलब ये देखते हैं हमको कितना काम ऑलरेडी दे चुके हैं। Correct. Correct. We find a few good people. We try to empower them too much. Right. So empower employees through open discussions. Right. Inexperienced employees require more detailed advice. Interim milestones set karo. Split the tasks. Create an environment of trust and freedom. Let them do it their way. Sufficient authority, responsibility. बहुत जरूरी है. They'll find their own creative brilliance to do that task. You found your brilliance to do the task. जब आप करते थे, आपने अपने अंदर brilliance ढूंढी, आप visualization कर पाए. Right. Another visualizer will do it very differently. Yes. Not exactly in the same way you did it. Allow that freedom to explore itself. Even your children will do it very differently than the way you did. जैसे मुझे गिटार पकड़नी नहीं आती थी लेकिन उसको आती है. Right. Because he knows a different way of doing it. And then you, of course, review the entire process. Provide feedback. Support provide करो, feedback provide करो, लेकिन काम मत करो उसका. जैसे आप किसी को डेलीगेट करना चाह रहे हो, एम्पावर करना चाह रहे हो, कि डील क्लोज करके आ. अगर वो फंसता है तो अलाउ हिम टू आस्क यू क्वेश्चंस. शेयर योर एक्सपीरियंस विद हिम. ऐसी सिचुएशन में आप ये कर सकते हो. क्रिएट हिज मेमोरीज ऑफ सक्सेस ताकि नेक्स्ट डील वो खुद अपने तरीके से कर पाए. So this is the quick story of HCL and Vineet Nair. So he joined HCL in '85 and after his MBA became president of HCL in 2005, CEO from 7 to 2013. And this Doran, revenues and market cap grew by 6 times. And before he became the CEO, HCL was already growing at 30% CAGR. So normal logic says कि सब ठीक है. Compounded average growth rate. Annual growth rate. Compounded annual growth rate. That is the revenue. Revenue पे. हाँ. Always revenue, right? It is average actually. You can look at CAGR monthly also. You can look at daily CAGR also. हाँ, but वो CAGR का मतलब annual growth rate है. Annual Annual rate is used for So it annual. can be on revenue. It can also be on profits and market cap. But ज़्यादातर revenue के लिए use होता है. The problem was कि HCL 30% पे grow हो रहा था, but इसके competitor 50% पे grow हो रहा था, right? And they were losing both market share and mind share.
So he was a very unconventional kind of a guy, you know, very radical practices. And he knew that the firm needed some dramatic change to avoid a slow glide path to becoming a second-tier IT company. So between 2005 to 2010, he embarked an all-out effort to transform his company into a high-performing organization. And this was his tools. So he sought enough empowerment and transparency in the company's culture that decisions were made at the points where decisions should be made. इस लाइन पे फोकस करें आप. विनीत नैयर जी ने कहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, right? But this point is very important. Decisions were made at the point where decisions should be made. इस टाइप का एम्पावरमेंट चालू था, right? And his entire philosophy was to completely flip the management pyramid, where he said that employees first, customers second. And when he did that, he not only did it, but he also announced it to his customers कि आप हमारे लिए नंबर 2. तो छिपा छिपा के काम नहीं किया था, खुल के किया था. And customers appreciated it. They did not feel inferior because they understood that any organization of their kind which empowers people to do what they're supposed to do will by default serve customers in a much better way, as opposed to thousands of robots who are only following instructions. Can there be certain examples? या सुनने में अच्छा लगता है employee first, customer second. Yeah, of course. Certain examples where customers actually came first. The second point, revenue generating employees. So, The whole company is a revenue generating, like all employees are revenue generating employees, directly or indirectly. Directly or indirectly, yes. But we'll come to a few examples. So he had a 4-phase transformation process, right? Out of which the first one was mirror, mirror, confronting the truth. I'll explain what this means. Using transparency to build trust, inverting the management pyramid, and recasting the role of the CEO. Let's see, अभी examples आएंगे आपके पास. So he says that I realize that no one will jump into the future until the organization acknowledged that we needed to do so. Very powerful statement. No one will jump into the future until the organization acknowledged that they needed to do so. So everybody is stuck, right, in their own traditional mindset, but this is how work is done, and this is the norm. Norm को accept कर लिया. So the first idea he had was mirror, mirror, confront the truth. So the first couple of initial weeks just went around meeting all the senior managers, executives, and he discussed the reality of the business in a very unbiased way, and he called it point A. कि हम point A पे अभी बैठे हैं, अभी ऐसे नजर आते हैं. Then he met customers, understood their viewpoints, and derived a potential point B. Tried to define the vision of HCL's future. Reality ये है, customers की expectation अलग level पे चल रही है, point B है. There's a gap. The entire process was named Mirror Mirror as it was symbolic to holding up a mirror to the company, forcing people to see the reality of the situation. Why did he do that? Because he felt people were quite okay to grow at 30%. They were quite okay to do things which traditionally gave them success. There was no panic situation as such. So unless and only आपको कोई शीशा दिखाए कि दुनिया कहाँ आगे जा चुकी है और आप कहाँ पर हो, right? Confronting the truth. We're trying to do that exercise with Shami yesterday. Right? It will take a lot of time before he starts to accept that his GP is not good. Right? It's like mirror, mirror. बार बार शीशा दिखाना पड़ेगा. दुनिया कहाँ है, आप कहाँ हो? दुनिया कहाँ है, आप कहाँ हो? Right? अपनी कंपनी के अंदर realization लानी पड़ेगी. Then only you will start taking very different kind of actions. That was his first step in the journey of transformation.
So in July 2005, I convened a meeting of our top 100 managers and proposed that HCL will transform itself from being an IT services vendor to an end-to-end global IT services partner that can compete with companies like IBM and Accenture. So उस टाइप की vision build कर रहे थे. And he says, I don't care if we adopted the right exact strategy. I reason that if these smart and experienced people rejected my proposal, look at the language. These smart and experienced, he was trusting his people to be brilliant. Yeah, I'm going to put up a proposal, and if they rejected it, they would come up with another approach as good or as better than mine. Right? I asked the managers for their views in order to identify the yes buts. Yes buts. That means you're now giving them a challenge. Yeah, I proposed to you something. Can you challenge this? That means you're trusting their brilliance. We spoke about brilliance in the morning. You're not treating your people like dumb people, like robots, passing instructions to them. Yes buts are the very heart of collaboration. If you don't respond to them, you will never get the people who have questions or doubts to play with in the team. One, if you don't allow, whether it's your kids or your employees, to say yes but, तो या तो वो convert हो जाएंगे into becoming dumb machines, right? या जो इस टाइप के अच्छे लोग हैं वो आपकी टीम में आएंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं. मैं आपको ये बताऊँ, जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो ब्रिलियंट लोग कौन है, जो अपनी ब्रिलियंस रियलाइज कर चुके हैं. ब्रिलियंट तो सारे हैं right? जो रियलाइज कर चुके हैं वो कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करेंगे जहाँ पर क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ब्रिलियंट पीपल थ्राइव ऑन क्रिएटिविटी. उनको नए तरीके से प्रॉब्लम को देखना आता है. क्रिएटिविटी इज नथिंग बट लुकिंग एट अ प्रॉब्लम डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द नॉर्म. These are the 5 steps to solve it. If you want to attract such people, then you create that environment. And creative people fail frequently, so you have to be okay with it. But they also create some exceptional stuff that you can't even imagine. Exactly. Right. With their brilliance, which is inherent. Right. So he says, I said very little during these discussions. I did not want to provide any answers, offer any justification, make new suggestions. I wanted alignment to emerge on its own. 3 days of debate later, we did agree to adopt the strategy I proposed, but everybody was on board, at least in theory. जब क्रिएटिव लोगों को आप मौका देते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ब्रिलियंट लोगों को, the ones who have realized they're brilliant, and they start contributing to a process, then they start owning the process. But there are many companies who do these 2 days, 3 day retreats, and all they do is just keep sharing their vision, goals, objectives, and handing over and assuming that people will follow. Just because you have given it, so people should follow. ऐसा नहीं होता. And then he started to organize informal meetings. Right, again communication, no WhatsApp, no emails. ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई. Engaging them in discussions about the kind of company they wanted to work for. And in 2006, these meetings took the shape as formal company-wide meetings called directions. मतलब लोगों से पूछना शुरू किया, कैसी कंपनी चाहते हो? पहले तो एक्नॉलेज किया कि मिरर मिरर वी आर नॉट द बेस्ट. फिर सबसे डिस्कशन करनी शुरू की. प्लीज शेयर योर ब्रिलियंस, शेयर योर थिंकिंग. व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डू यू वांट? And then the second step we did was started using transparency to build trust. Right? कैसे? Started sharing financial data. बहुत बड़ी बात. ये अभी आज ही बात हो रही थी कि वो कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाते हैं कंपनी टीम को. We were discussing on that. बहुत ज़रूरी है. फाइनेंशियल डेटा भी दिखाना, कोई खराबी नहीं है उसमें. कोई खराबी नहीं है. ट्रस्ट मी. कोई नुकसान ही नहीं है उसका. तो कंपनी का HCL ऐसी कंपनी तो डिस्प्ले होती है ना. नहीं इनसाइड फाइनेंशियल Internal data.
इंटरनल डाटा होते हैं कुछ Internal data थोड़ी आता है annual report में। पर पर्सन प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है पर XYZ मतलब बहुत चीजें बहुत रेवेन्यू कौन से वर्टिकल का कौन से कितना वर्टिकल GP का है, रेवेन्यू डिप कितना कौन सा है क्लाइंट कितना प्रॉफिट दे रहा है, हाँ लाइक ये सब डेटा थोड़ी होता है एनुअल रिपोर्ट नहीं, में, है ना? बहुत इंटरनल डीप डाटा